Hello, good morning, student. Welcome to the Pratik Pal online classes. Today I will discussing about the Newton's law of motion. So please like, share, and subscribe the channel in the YouTube. So बिना टाइम गमाए स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन because we know that according to a first law an object at rest stays at rest or an object in motion stays in motion in the same direction at the same speed unless acted upon by an unbalanced force. It is also called the law of inertia. So we can explain about first law of motion. So let's this is this is a surface, a body. A moving body is placed upon it when this is moving with velocity v. तो ये रुकेगी but we know that here one more force is worked on, that is called friction force. Here friction force is work. अगर यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो ये बॉडी इसी डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव करती रहती। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. Newton's second law says that the force is applied on a body is always equal to change in momentum. So we know that we can say that F is equal to derivative of momentum with respect to the time, and where v is the momentum. We also know that p is equal to mass into velocity. According to the distribute law of derivative, we can say that f is equal to d of momentum with respect to the time, and we also know that f is equal to mass into derivative of velocity with respect to the time plus velocity into derivative of mass with respect to the time. For the position of rest mass or in Newtonian mechanics, नो चेंज इन मास, या क्या, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन ऑफ मास लगभग जीरो होता है. आइंस्टीन ने जो अपनी फिजिक्स में बताया था वहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ मास कुछ ना कुछ होता है. We also know that derivative of velocity with respect to time is called the acceleration. So we found the well-known formula F is equal to ma. SI unit of F is Newton. So we do not the capital N. Next we will discuss the more on the Newton second law applications. Application of second law. When mass is in kilograms and acceleration is in meter per second, the unit of force is in Newton. देखिए इसको एक बार फिर क्लियर कर लेते हैं. We know that F is equal to ma. F is equal to ma. M. So मास किस में होगा हमारा? किलोग्राम में. किलोग्राम इंटू एक्सेलरेशन किस में होगा? मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड. सो ये हमारा बन जाएगा न्यूटन. ओके. अब 1 न्यूटन की हम डेफिनेशन देख लेते हैं. 1 न्यूटन फोर्स हमें कब जरूरत पड़ेगी? जब हमारा मास 1 किलोग्राम होगा, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड होगा, तभी तो हमें 1 न्यूटन फोर्स मिलेगा. एक नई बात, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन हमारा होगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन